Tell me the best credit card for personal. Amazon, ICICI card. People who shopping on e-commerce sites, then Flipkart, Tata New, shopping के लिए वो है. अमेरिका बहुत क्रेडिट डिपेंडेंट है वर्सेस इंडिया. क्या फायदे मिल रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी को बिकॉज क्रेडिट पे वो डिपेंडेंट है? Because of relative availability of credit, the US economy benefits in terms of ability of consumers to spend, does give a amount of impetus and stimulus to economies like US. यहाँ पे क्रेडिट को एज अ डेविल देखा जाता है. इंडिया में टुडे 11 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड्स हैं बस ऑन अ पॉपुलेशन बेस ऑफ 1.4 बिलियन. देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज. क्रेडिट कार्ड्स कौन सा सबसे अच्छा होता है? Travel, dining, entertainment, shopping, those tend to be the most offers and benefits that people tend to like and consume. कार्ड जो सबसे एक्सक्लूसिव कार्ड है वीजा का. This is a very interesting card. This is a card and this is the first time that So what all can you predict based on data? the data empowers us to get insights into लोग हमारे कार्ड्स के साथ क्या खरीद रहे हैं, और ये डेटा हम बैंक्स के साथ शेयर करते हैं, which allow the banks to then decide कि किस कस्टमर को किस टाइप का कार्ड दिया जाए, किसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, किसको मैं सिर्फ डेबिट कार्ड पे रखना चाहता हूँ. वीजा कैसे पैसे कमाता है? When a transaction happens, the merchant actually pays a certain part out of their earnings. A part of that actually goes to the banks. Then there is a Visa, small part that Visa retains. There's a risk with digital payments. How do you solve for that? आज हम समझने वाले हैं क्रेडिट कार्ड वर्ल्ड के अंदर छुपी हुई रियलिटी, हैक्स और मिथ, सेफ्टी सिस्टम्स जैसे टोकनाइजेशन, ट्रैवल रिवॉर्ड्स का पॉइंट्स गेम, और ये कि कैशलेस क्रेडिट ड्रिवन इकोनॉमी हमारे लिए कितनी अच्छी या रिस्की है. आज के हमारे गेस्ट हैं संदीप घोष, ग्रुप कंट्री मैनेजर वीज़ा इंडिया एंड साउथ एशिया. हम उनसे जानेंगे कार्ड के पीछे का सिस्टम और वो ज़रूरी चीज़ें जो आपको हर स्वाइप से पहले पता होनी चाहिए. एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए. बाय देन यू विल नो हाउ टू यूज़ कार्ड स्मार्टर, सेफर एंड टू योर एडवांटेज. और अगर आप वीज़ा कार्ड्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में और जानना चाहते हो, देन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. टेल मी अबाउट द डेटा. ओके, आपको क्या क्या पता है? What all can you predict from the point of view of just data? I was reading a stat कि VisaNet can track real-time data of spending and buying behavior of people from 200 different countries. Like at some point, like you would know कि कौन कहाँ पे उड़ा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, ट्रैवल किस कंट्री में बढ़ रहा है, किस कंट्री में पैसे कम लोग खर्चा कर रहे हैं, किस कंट्री में लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन खर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ डर का माहौल है, राइट? सो प्रोबेबली यू कैन प्रेडिक्ट सम लेवल ऑफ रिसेशन, सम लेवल ऑफ कंट्री कितनी तेज़ी से ग्रोथ पे स्पेंड कर रही है, कंट्री के लोगों में अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितने लोगों को डर लग रहा है, ऑल ऑफ दिस, राइट? Like you would so what all can you predict just based on data? Yeah. So great question, Raj. So एक तो when you do a transaction, जब आप करते हैं कार्ड पे, there is a digital record of that transaction कि हाँ संदीप ने राज से कुछ खरीदा है, इसका एक रिकॉर्ड रहता है. तो कल मान लीजिए अगर आपने मुझे कुछ सप्लाई किया विच इज़ डिफेक्टिव, या आपने किसी चीज़ के लिए पैसे लिए but that promise or that service didn't get delivered. मैंने आपके थ्रू होटल बुकिंग किया, एयरलाइन टिकट खरीदा, and there was a issue. ठीक है. The visa rules provide a mechanism for raising a dispute. जो कि in other forms of digital payment, cards are not the only form of digital payment, there are many other forms. There isn't that kind of a mechanism to go to your bank and say, I bought this using my card, और जो चीज़ मैंने खरीदा या तो वो डिफेक्टिव था या वो सर्विस मुझे नहीं मिला है, जिसके वजह से I want a refund or I want to raise a dispute. So you have that mechanism. Now obviously you can't raise a frivolous dispute, and if you do, शायद आपका बैंक
is not able to help you, but at least you have that mechanism. And the second difference or important point for people to consider is when these transactions are happening, also in the background, जो हमें पता नहीं है, but there is a lot of checking going on, leveraging artificial intelligence, machine learning, and other tools to see, is this a genuine transaction or could this be a fraudulent transaction? तो हमारे तरफ से as Visa, basis all the data that you were referring to that we have and all the transactions that we are able to see globally, we have designed some invisible to the common person tools with which or rules with which we are able to do some kind of screening of these transactions. Okay. और अगर हमें लगता है कि this could be a fraudulent transaction, this could be a scam, then we are able to raise a flag to the bank that has issued the card. Now it's up to the bank, based on the Visa score or the flag, to decide ki will we approve this transaction or will we reject it. Sometimes the bank may do it automatically if the risk score is very high, or the bank may call back the customer and say, Raj, we are seeing कि आपने अपना कार्ड थाईलैंड में यूज किया, क्या आप वाकई थाईलैंड में हैं? Is this a genuine transaction? And you might get such a call. And if you say, no, I have used the card, I'm actually in Bangkok right now, the transaction goes through. But if you equally say, no, I am in Mumbai, how is my card being used in Thailand? Immediately the card transaction gets rejected. So I talked about 2-3 things. Ek to thousands of transactions that are taking place every second, millions every day and billions every year. We see those transactions and we facilitate the genuine ones to go through. We have mechanisms to alert the bank, who then alerts the customer if there is a transaction that appears to be fraudulent. We also have rules by which if a customer feels that they got cheated or they got something that was substandard, they can raise a dispute. And the last thing I would say is, by the way, all this data, Raj, is not at an individual level, it is at an aggregate level. Okay. Because as Visa, we don't directly own the customer. The bank owns the customer, जिन्होंने आपको कार्ड इशू किया है. तो अगर आपकी अकाउंट है HDFC या ICICI या एक्सिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस बैंक से भी आपने अकाउंट खोल रखा है जहाँ पे, और जिन्होंने आपको कार्ड दिया है, यू आर द कस्टमर ऑफ द बैंक, नॉट ऑफ वीज़ा. तो हम कस्टमर लेवल पे डेटा नहीं देखते हैं, हम एग्रीगेट लेवल पे डेटा देखते हैं, विच इज़ वाई वेन एवर वी नीड टू टेक सम एक्शन बेस्ड ऑन डेटा, पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन, वी हैव टू कनेक्ट विद द बैंक. द बैंक देन डिसाइड्स कि हम इस डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं और किस बेसिस पे हम कस्टमर को फिर बताएं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, या इट कुड बी इवन समथिंग पॉजिटिव, एंड आई विल गिव यू सम गुड पॉजिटिव एग्जांपल्स. एंड द डेटा दैट यू स्टार्टेड द क्वेश्चन विद empowers us to get insights into लोग हमारे कार्ड्स के साथ क्या खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, और ये डेटा हम बैंक्स के साथ शेयर करते हैं. हम डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करते हैं, बिकॉज एज आई सेड द बैंक ओन्स द कस्टमर. सो वी कैन गिव द बैंक्स ऑल दोज इनसाइट्स विच अलाउ द बैंक्स टू देन डिसाइड कि किस कस्टमर को किस टाइप का कार्ड दिया जाए, किसको मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, किसको मैं सिर्फ डेबिट कार्ड पे रखना चाहता हूँ, किस कस्टमर को क्या रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स दूँ जिससे कस्टमर भी खुश हो और वो हमारे बैंक के साथ या फिनटेक के साथ और भी मतलब बिजनेस करे या काम करे. सो ऑल ऑफ दैट इनसाइट एट 2 लेवल्स. एक तो जो बिजनेस बढ़ाने के लिए होता है कस्टमर के साथ, और दूसरा जो होता है बिजनेस को प्रोटेक्ट, मतलब रिस्क और फ्रॉड और स्कैम से प्रोटेक्ट करने के लिए. दैट डेटा एंड इनसाइट्स इज शेयर्ड विद द बैंक्स एंड द इशूअर्स ऑफ द कार्ड्स, और इवन विद द मर्चेंट्स. जैसे हमारा एक को ब्रांड कार्ड है विद Amazon. So data and insights can also be shared with Amazon, with the bank or with the merchant. What insights do you share? Give me an example. कि अब
मैं एक बैंक हूँ, वीज़ा मेरे साथ क्या इंसाइट्स और डेटा शेयर करता है जो मेरे लिए हेल्पफुल हो? बहुत सारा डेटा है, बट लेट मी गिव 2-3 स्पेसिफिक एग्जांपल्स. एक तो मैं बता सकता हूं कि when is Raj highly likely to go and do some travel? वो मैं कैसे बता सकता हूं? क्योंकि आप you start looking at booking.com, trip.com, makemytrip.com to start looking for tickets, hotels. So even before you physically travel, especially if you're traveling overseas, but even if you're traveling within India, आप वो सर्च शुरू करते हैं and you start making bookings for airline tickets, for hotel bookings, for maybe some specific destinations. बट सिर्फ सर्च पे थोड़ी पता चलेगा. नहीं, सर्च पे मुझे पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही आपने पहला बुकिंग किया, आई नो दैट देर इज अ ट्रैवल दैट इज गोइंग टू कम अप. तो बुकिंग के बाद तो ऑब्वियस. बुकिंग के बाद ऑफ कोर्स, राइट, at the time the first time the card gets used for any kind of domestic or international booking, we get that information, right? That is one. Second, let me give a completely different thing. Let's say tourism. You know that India is very focused on growing inbound tourism. So we as Visa are able to see where are tourists traveling, which are the countries they are going to, what kind of tourists from which source country, what are their preferred destinations. वो कितने महीने पहले they start planning for those travels, right? When they come to the destination country, वो किन किन चीज़ों पे खर्चते हैं, what do they spend on, where do they spend. So there's a lot of insights we have on travel, on outbound, inbound, domestic, international. Okay. So these are insights we can share with a tourism board. We can share that insight with government. We can share that insight with a hotel chain or an airline. We can share that insight with the banks also, because banks also want to target their customers to offer them special offers and deals when they are looking to travel. And maybe certain types of banks or certain types of governments or authorities body, वो कुछ कंट्री के लोगों के लिए स्पेशल ऑफर्स या स्पेशल टाइप की चीज़ें बना सकती है, बिकॉज यू वुड शेयर डेटा कि अमेरिकन्स जब इंडिया आते हैं तो इन टाइप की जगह पे स्पेंड करते हैं, बिल्कुल. यूरोपियंस जब आते हैं तो इन टाइप की जगह पे, चाइनीज़ जब आते हैं तो इन टाइप की जगह पे आते हैं. दैट्स हाउ यू वुड डू. एब्सोल्युटली. आप एक चीज़ आप भी सुन के यू विल बी सरप्राइज. You know, people from South Korea and Japan, because they have a lot of interest in Buddhism. One of the places they travel to in India is Gaya, Bihar. And someone was telling me, I'm not 100%, I might need to fact check that from some of these countries, there are even now plans for direct flights to Bihar, I mean to Gaya. There might be like charter flights or whatever, right? This is not something that is that well known. जो लोग शायद गया में रहते हैं उनको तो शायद पता होगा कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, बट साउथ ईस्ट एशियन से इधर आते हैं, साउथ कोरिया और जापान से, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म, राइट? सो एब्सोल्युटली, इफ यू would have, if you think about it, in the last 10 years, Indians have also become very major travelers. In fact, we are now right up there, getting right up there with the Chinese when it comes to outbound travel. And some countries, Raj, like UAE, Singapore, Thailand, Sri Lanka, their tourism boards know that Indian travelers are making up a very substantial chunk of their inbound tourists. Yeah. It's no longer only people from America or Europe. तो ये tourism boards भी India में they want to run campaigns. Yeah. And Raj, these campaigns are not only in Mumbai and Delhi.
मुंबई दिल्ली वालों को तो दुबई के बारे में, सिंगापुर के बारे में अच्छी तरह से पता है. They want to run campaigns to attract people from tier 3, tier 4 places because that's where the new international traveler is coming from. Yeah. Right? So absolutely. So we talked a lot about insights and data with respect to tourism. It's both inbound and outbound. By the way, I'll give another example. The New York Metro, London, New York, Singapore, Hong Kong, in many of these global metros, today, if you take your Visa card, you just tap when you enter the station, और आप कहीं पे भी उतर जाओ, when you are leaving the station, you tap. And the payment gets billed to your card directly. आपको अलग से वो कार्ड लेने की आज कोई अलग से कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ स्कैनिंग वैनिंग कुछ नहीं. और अगर आपने अपना कार्ड अपने फ़ोन पे भी सेव कर दिया तो या तो आपको जेब से कार्ड निकालने की भी ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ वो फ़ोन को टैप करते जाइए एट एवरी टर्न स्टाइल एंड अंदर जाते वक्त बाहर आते वक्त, और पूरे दिन का आपका ट्रैवल का कैलकुलेशन आके आपको यू विल गेट एन अपडेट कि आपने इतना ट्रैवल किया था एंड वो आपके स्टेटमेंट पे भी आ जाएगा, है ना. फेयर. वैसे बिकॉज यू आर फ्रॉम वीजा यू वुड हैव so many different hacks and quirks जो हमें पता नहीं होंगे. Let's dive into that. Okay. Fun stuff. Serious stuff is over. Serious stuff is over. But before we actually go there, I have like two fundamental questions, very basic. Okay. First is कि limits कैसे decide करती है बैंक. मान लो एक बैंक है, मैं उनके साथ, मैं 18 year old था, मेरा फर्स्ट बिजनेस से लेके आज तक 29 now 11 years से मैं उन्हीं के साथ बैंक कर रहा हूँ. उन्होंने मेरी देखिए 10,000 रुपए से करोड़ों रुपए की ग्रोथ उन्हीं के बैंक में होती है, एक ही ब्रांच में होती है, हर जगह. राइट, दैट्स देव सीन माई ग्रोथ, आई बैंक विद देम. उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, उनके पास मेरे पर्सनल स्टेटमेंट्स भी हैं, एवरीथिंग है. राइट, और वो मुझे कार्ड देते हैं 10 लाख रुपए की लिमिट का. मतलब उन्होंने 2 लाख दिया और 10 लाख किया, 10 लाख पे कैप कर दिया, 10 लाख रुपए से ऊपर क्रेडिट कार्ड वो लिमिट ही नहीं दे रहे. सेम ही इंसान हूँ मैं, मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं है में. उन्होंने मुझे दिया 1 करोड़ रुपए का, ओके, कि मैं एक दिन में 1 स्लॉट पे 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर सकता हूँ. सिमिलरली मुझे और बेटर कार्ड दे दिया जिन्होंने बोला आप कुछ भी करो, आपकी जो इच्छा हो, कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट कार्ड, शैडो लिमिट होती, आपका जब मर्जी आप फ़ोन कर देना, उतना खर्चा कर देना, आपको कार उठानी जाके आप जाके. अब मेरा ITR सेम है, मेरे कंपनी के डॉक्यूमेंट सेम है, मैं इंसान सेम हूँ, मेरा सिविल स्कोर सेम होगा, मेरा क्रेडिट भरने का बिहेवियर सेम होगा. एक जिसके साथ मैं बैंक करता हूँ, जिसके साथ प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा डेटा है, वो मुझ पर इतनी कम लिमिट देके मुझ पर इतना कम ट्रस्ट क्यों दिखाता है, वर्सेस 2 दूसरे बैंक या दूसरी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडिंग सर्विसेज जिनके यहाँ डेटा भी कम है, वो मुझे जानते भी नहीं है और वो मुझे ज़्यादा देते हैं जस्ट बेस्ड ऑन माई ITR और मे बी माई कंपनी फाइनेंशियल्स. सो राज, क्यों अलग अलग एंड इतना वास्ट इतना डिफरेंस. हाँ, कि 1 करोड़ वर्सेस 10 लाख इज ह्यूज डिफरेंस. हाँ, तो राज, आई विश इसका कोई अच्छा या लॉजिकल जवाब होता, पर इसका लॉजिकल जवाब नहीं है. एंड दैट जस्ट गोज टू शो कि हमारी जो सिस्टम है इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट. जो आप कह रहे हैं, एंड इवन विदाउट बीइंग अ बैंकर और अ फाइनेंस प्रोफेशनल, जो आप कह रहे हैं इज़ हाईली लॉजिकल. कि जहाँ पे आपकी अकाउंट है, 10-15 साल की हिस्ट्री है, लॉजिकली दैट शुड बी द प्लेस वेयर दे हैव ऑल योर डेटा, दे शुड हैव ऑल द कंफर्ट, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट कि ये बंदा क्या है और कहाँ से कहाँ आ चुका है, टू बी एबल टू टेक अ इवन little bit leap of faith. Forget about this उनके thing. तो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े मेरे. हाँ. उनको चाहिए तो यहीं से निकाल लेंगे. So logically that's how it should function. हाँ. It is almost surprising that see, we have a very stable, strong and reasonably well managed financial system, but there are still many areas where we need to catch up with the best in the world. And this is one of them. Credit risk assessment. Individuals, of self-employed, of companies is one of them. I'm just adding more to your example than giving you a great answer. I used to work in a bank. I was an employee there.
When I joined the bank, I was a vice president. 10 साल में मुझे 3 या 4 प्रमोशंस मिले. और उन 10 सालों में एक तो नेचुरल इन्फ्लेशन, फिर 4 प्रमोशन. सो माई सैलरी वेंट अप, माई स्टेटस वेंट अप, एवरीथिंग वेंट अप, बट माई क्रेडिट कार्ड लिमिट रिमेन द सेम. अब आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इवन एज एन एम्प्लॉई ऑफ द बैंक, राज, आई went through this same experience जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, and it was really surprising. And another bank came and gave me a better limit. So I think the system is far from perfect. I might say that the third example that you gave of some place where आपके पास वहाँ बैंक अकाउंट भी नहीं है, they may have gone basis today what you have achieved as a personality by looking at your company and intangible this thing, the last one, the brand, you know. They may have gone on Raj Shamani brand and done something which is also creditable, you know. But this is a system which is very, very far from perfect. I have experienced the same. One of the things I tell all my clients is that how can we as Visa share insights and data to help you manage your own clients better through their life cycle. Exactly जो बात आप बता रहे हैं. And it's not that our data is by itself great. It is our data combined with your data as a bank, as well as data from external third parties. When you bring all that together, तब जाके आपको समझ में आना चाहिए that am I operating on some legacy historical information, or have I used the latest information that is potentially available? वो तो दिख रहा है ना, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छुट्टियाँ मना रहे हैं, आपने लास्ट कौन सी घड़ी खरीदी या ज्वेलरी खरीदा आपने, सब कुछ दिख रहा है. So why they are not able to make that adjustment? So system is far from perfect, and I think that's a huge area of improvement. And I'm not once suggesting कि Visa has the secret sauce. We have enough and more information and data, but ultimately we work through banks, and our job is to help our banks manage customers through their life cycle better with our data and insights, the bank's own data and external data. So that's absolutely आप जो बता रहे हैं, and your insight and your life experience is just reflective of where our system is not great. And like I said, one is credit limit, but even the time to sign up for a card. Yeah. There are some players and some apps which will give you instant. वो आपको seconds में they'll give you a virtual card, और 1 या 2 दिन के अंदर you will get the physical card. Yeah. Somebody will understand that Raj is very, very big into experiences. He loves going out to restaurants for dinners. He loves going to shows. So they'll come up with something which gives you what you want. Large legacy organizations tend to have more standardized offers. So the differentiation and the marketing and the insights and the data is not only about the credit limit. It's also about the rewards, the benefits, the offers, the whole time to issue a card, the service levels, the how user friendly the app is. Cards में एक और चीज़ है called card controls. जब आप overseas travel करते हो, you have to enable your card to use overseas. आप जब contactless tap and pay करते हो, you have to enable the card. Yeah. कुछ organizations ऐसे हैं जहाँ पे आपको वो enable करने में आपको 10-15 मिनट लग सकता है, because you have to go to their website or their app and आपको ढूंढना पड़ता है. और 24 to 48 hours लगते हैं to actually activate or something. Some are absolutely super duper easy and intuitive. आपने ऐप खोला और फट से आपने enable कर दिया. आपको अगर disable करना है आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, enable करना है 2 सेकंड में. So this is an area where I think as an ecosystem we need to improve. And sometimes we find that some organizations or banks do a better job than others. And it's not universal कि
आपके एक्सपीरियंस में बैंक X और Y may have done a great job and A or B may not. मेरे एक्सपीरियंस में it can be even the reverse. Yeah. So it's nothing personal, but this is a systemic challenge, and this is an area of improvement. True. Tell me one very curious question I have कि जब आप कार्ड के स्टार्टिंग में नंबर्स होते हैं राइट, वो कैसे डिसाइड करते हो? जो हर किसी को अलग अलग नंबर मिलते हैं, एंड स्पेसिफिकली ऐसा भी होता है कि जैसे ही मैं किसी वेबसाइट पे फर्स्ट 4 डिजिट डालता हूँ, वो बता देता है कि ये वीजा है कि मास्टर कार्ड है कि एमएक्स है. लाइक व्हाट इज दैट? करेक्ट. सो दैट्स कॉल्ड अ 16 डिजिट पैन. ओके. एंड थिंक ऑफ इट लाइक सिंपल टर्म्स में आप उसको सोचिए जैसे कि आपके बैंक का एक अकाउंट नंबर होता है, और वो 16 डिजिट्स में से ना पहले 4 और 6 डिजिट्स में से आपको पता चल जाएगा कि वो वीज़ा कार्ड है या किसी और नेटवर्क का कार्ड है. यू गेट टू नो फ्रॉम द फर्स्ट 4 to 6 डिजिट्स बिकॉज दे आर सेपरेट कोड्स. तो वीज़ा क्या कोड है? So I will show you all our cards, and again it's codes, and then it differs. We this thing. So if I type 4211 itself, okay, on a merchant site or on a website, it immediately shows up as a Visa card, right? And it could be something different for other networks. So there are millions of numbers, but you will see all our cards will have some kind of a digit. So the 4 pan, the 434342. So it's a तो 4342 तो वीजा होता है. हाँ. So that's how it is. So it's a pretty 44. So all our pans have a 4 at the beginning. 4 से तो वीजा है. Yeah. 3 से तो एमएक्स है. 5 से तो मास्टर है, right? ऐसे कुछ. It's somewhere around that. Yeah, right? yeah. I'm not sure. I'm just asking you. Yeah. So that's how it works. And then now there is another sort of phenomenon in India, which is tokenization. So the RBI made it mandatory that the merchant shall not store a card number. So the merchants can only have a token, and as a consumer you give consent to the merchant to tokenize your card. So कभी कभी आप देखोगे when you go to a merchant जहाँ से आप बहुत frequently transactions करते हैं जहाँ पे, and if you have given consent, so your card has been tokenized there. Typically when people do a lot of shopping on Amazon or Flipkart, if they frequently do food order with Swiggy or Zomato, if they frequently go to a particular site, the tendency is for them to allow for the card to be tokenized. Yeah. So, but what is important is that आपका card number is not getting stored there. A token is getting stored, with the help of which the bank, the merchant, the network can recognize you, and many times then you don't have to fill in all the details again and again. It gets pre-filled. But इसका मतलब क्या है? So it टेक्निकली ये इसलिए बनाया क्या क्योंकि मिसयूज ना हो कार्ड, राइट? वो डेटा अगर किसी ने वेबसाइट से चुरा लिया तो वो यूज ना हो. बिल्कुल. बट अगर ये वेबसाइट से डेटा चुरा लिया किसी ने, so तो वो टोकन भी तो चुराई. So basically if they get hold of a token, there is nothing they can do with it. Oh, why? So token is like a secure vault. It's a code, and that code is not, you cannot trace that back to who you are and your card. So there is, it's a huge safety factor. What it also does is कि आपने अगर किसी साइट पे अपना कार्ड को टोकनाइज कर दिया with your consent, like I said, because you use it frequently, the chances then the payment goes through in a very seamless way is also higher. So wherever cards get tokenized, we see
a much higher success rate of payments. Kabhi, when Failures people are, there is a failed payment. So that is much higher. And now we are looking at creating something, a new kind of feature and functionality where again, all of this can only happen with customer consent, जिससे कि कई sites पे आपको 16 digits, 4 digit expiry date and 3 digit CVV number key करना पड़ता है, right? So the tokenized card can take that out, and then we want to create another sort of facility where with consent and something called pass keys, which is an alternate form of authentication, you don't need to also go through the OTP. बिकॉज OTP में भी कभी कभी फ्रिक्शन होता है. लाइक या तो आपको टाइम पे SMS नहीं मिला, या आपको SMS मिला और उसको टाइप करते हुए यू हैव अ एरर and it leads to a failed transaction. Either lack of receipt of SMS और जिसको हम कहते हैं fat finger typing, तो जिससे गलती हो जाती है, तो उसके वजह से आपका transaction fail होता है. And the whole idea of digital payments is you want frictionless transaction, but at the same time you want the highest level of safety and security, right? So through biometric authentication, through pass keys and other forms of authentication, you want to reduce the friction of OTP. And through the card on file tokenization, you want to take away the need for the customer to have to type in 1643. ताकि the whole transaction is really, really fast and smooth and at the same time safe and secure. And आपने मुझे पूछा था what is a good sign of a hack and what do people do. So right now, say for example, Apple Pay is not in India. We all hope that some point in time in 2026, Apple will potentially come to India. And when it does, you can save your credentials on an Apple phone and use it just as you can use it anywhere else in the world. For now, on an Android device, which has a NFC chip, you can save your card credential. Or agar aap, if you have an Android device with your card credential saved, just try and see if you are at a PVR Inox cinema or you are at a fast food restaurant, आपके पीछे लंबा क्यू है, you want to take that popcorn and head back into the cinema hall, you will just see the mobile tap and pay experience. Literally it's seconds. And what we have seen everywhere in the world, that once people get the hang of mobile tap and pay, एक तो टैप एंड पे कार्ड से भी आप कर सकते हैं, बट कार्ड के टैप एंड पे भी आपको जेब से बटुआ निकालो, वहाँ से कार्ड निकालो, टैप करो. लॉट ऑफ पीपल नाउ, यंग पीपल, वो वॉलेट्स कैरी नहीं करते हैं, लेडीज हैंडबैग्स कैरी नहीं करते हैं. सो mobile phone is something you carry with you everywhere. So just that mobile tap and pay experience, where in a matter of 4 to 5 seconds the transaction is done. And of course, again, the regulations in India will have to allow for biometric authentication, because mobile pay aap typically now it's fingerprint, retina, password, etc. But that experience of mobile tap and pay is really, really good. So you spoke about a lot of credit cards. कौन सा सबसे अच्छा होता है? This is like asking a parent to choose which child do you like the most. अब एक सिनेरियो देता हूँ मैं. ठीक है, सिनेरियो वाइज हम लोग करते हैं. In fact, I wanted to ask a blatant question before even I give you a scenario. क्या can you actually travel? Like मतलब आप travel कर सकते हो क्या free में just with credit points? Is it possible? It is possible. It is possible based on
how much spends you have on your cards. It's possible कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और मतलब तो ब्रेक डाउन करते हैं इसको. हाँ, क्लास ऑफ ट्रैवल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल इन डिफरेंट वे. फर्स्ट, एक तो हर क्रेडिट कार्ड में यू फाइंड डिफरेंट फीचर्स, राइट? लाइक आई सेड, कुछ कार्ड्स होते हैं दे फोकस ऑन कैशबैक एंड दे कीप इट वेरी सिंपल कि आप कार्ड पे इतना स्पेंड करो और आपको इतना कैशबैक मिलेगा. It could be 1%, it could be 3%, and in specific cases, it can go as high as even 5%, right? A very good example of simple cashback at the core of the card proposition, जो हमारा खुद का example है, is Amazon ICICI Visa card, which is a very, very simple cashback proposition. क्या है उसमें? उसमें like you spend on Amazon and you can spend outside Amazon, and if you are also a Prime customer, you get a certain level of cashback. If you're not, you get a certain level of cashback. And like I said, it's a very simple to understand proposition क्योंकि it's simple cashback. आपको Amazon पे खर्चा करो तुम्हें पैसे वापस मिलेंगे. इतने सारे पैसे वापस मिलेंगे. Now, other side, you could have cards which have a host of rewards, and rewards could be like you collect points or you collect miles, and then you can either redeem the points and miles for shopping, for discounts, or you can convert those points and miles for a airline miles, or you can convert it for hotel points, which you then use, जो आप कह रहे थे ट्रैवल के लिए. तो या तो आप सीधे बैंक के जो माइल्स हैं उसको आप यूज कर सकते हैं ऑन अ ट्रैवल OTA टू परचेज टिकट्स, और यू कन्वर्ट इट टू Air India, British Airways, Singapore Airlines, any airline system, or you can convert it to Marriott Bonvoy or Taj points, ITC points, and redeem for hotel rooms and or for airline tickets. So those are like rewards and this thing. Some things give you specific privileges. Airline lounge privilege, golf, round of golf at Chembur or Willingdon or Delhi Golf Club or whatever. Some will give you membership in certain clubs or entry to certain clubs. Then you have experiences which are like concerts. Just this weekend, I was at a Vishal Shekhar concert, है ना? Last night. Saturday को था, Friday को दिल्ली में था, and Saturday को it was in Mumbai in NSCI Dome, and Delhi it was in IG Stadium. So if you have a Visa card, then you got they opened the ticketing for the concert exclusively for card holders, and that can happen for a sporting event. So globally we sponsor Olympic Games, FIFA World Cup, Formula 1, and locally जैसे हमने विशाल शेखर कॉन्सर्ट स्पॉन्सर किया था और कुछ और करने वाले हैं. So there are those kind of experiences. So either you could get if you spend a certain amount, you might get a ticket, or it could be that you just get that exclusive window to buy the ticket. So it could be a discount on the price of the ticket, or it could be be just कि you have a pre-sale for card holders. So all of that. Certain restaurants and other places, shopping restaurants, you could get discounts, or you could get some exclusive access. So with our Infinite card, there are a host of restaurants where the chef will come and curate a menu for you. So some things you can equate to money, and some things आप पैसों के सामने तुलना नहीं करेंगे. You will just say कि this is a very experience thing. It's something that is not about money, but it's just something that I'm getting very exclusively for myself, my family, or whoever, right? So all of that. Now, all of this put together, typically
between 2, 3, 4% of what you are spending on a card can come back to you in the form of rewards and benefits. Okay. So if you spend 100 rupees, 4 रुपए वापस आ जाएंगे. 2, 3, 4 रुपए, depending on the card. Some cards are very rich on rewards. Some cards are very rich on experiences. Some cards don't want you to do too much, I would say, matha pheti about rewards and experience, and just say कि आपको इतना cashback मिलेगा, because some people like that. They say, boss, मेरे पास इतने सारे cards हैं, मैं track नहीं कर सकता कि मेरे पास कहाँ reward, कहाँ experience, आप मुझे cashback दो. It's simple, right? So different cards cater to different needs of different customers, and but typically travel, dining, entertainment, shopping, and experiences around music, sports, etc. Those tend to be the most common offers and benefits that people tend to like and consume. Okay. So we were talking about best credit cards. Okay. So we'll talk about that. Okay. Tell me the best credit card for business, best credit card for personal, best, like let's say the most exclusive card which Visa has, and tell me all the perks of that as well. Okay. If you had asked my wife this question, she has a different set of preferences. Okay. तो पहले मैं उनके बारे में बात करूं तो my wife is a big fan of shopping on various e-commerce websites. Amazon not the only one, and therefore for people like her or my daughters who buy a lot on Amazon, Flipkart, Myntra, Nykaa, etc., like I said, many of these platforms have co-brand cards जो वो किसी बैंक के साथ इशू करते हैं, and उन cards में the reward system is very simple in terms of cashbacks and specific offers on their platform if you use it on Amazon, but you also get some offers if you use it outside Amazon, and so on and so forth. So, the Amazon ICICI card has nearly 5 million plus cards that have been issued to date, and is one of the most successful co-brands. उसी तरह जब आप US जाएंगे तो वहाँ पे one of the most popular cards in the US is the Costco card, because अमेरिका में Costco is very very popular. वहाँ पे आप जो भी खरीदने जाओगे, the price points are very very good, best value for money, and the Visa Costco card is very very popular in America, just as the Visa and ICICI Bank Amazon card is in India. So for people who have shopping on e-commerce sites as a top area of interest or passion, then those work very well. Okay. And Flipkart, Tata Neu, they have also got a co-brand card with Visa and another network, and that's also become very popular. Tata Neu card has become very popular. तो shopping के लिए वो है. ठीक है. अब जहाँ तक मेरा सवाल है, I look at overall rewards and what can I get for those reward points by way of travel related benefits. ठीक है. क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि travel is not just part of my job, but it is also my favorite personal hobby, interest, my interest, my passion in life. Therefore, I always look for cards जहाँ I can maximize the value and the offers and benefits when I'm traveling. तो पांचों कार्ड क्या ना समझाओ. So एक एक करके समझाऊंगा. तो in no particular order, this is an interesting card which is a dual co-brand, और ये इंडिया में पहला ऐसे कार्ड है जहाँ it's very common to see a co-brand card which has one airline, one bank, and the network. This has two airlines, British Airways and Qatar Airways. So
ये दिखा सकता हूँ बिल्कुल ऐसे? आप हाँ ऐसे दिखा दो, you can yeah, so it has two airlines and you can accumulate Avios points which actually work across British Airways and Qatar Airways, or you can redeem the reward points of the card for Avios which can be used on both airlines, but you can then pick depending on which of these two airlines you use more. You can pick a status match with either of these two airlines. But इस कार्ड की खासियत ये है कि it is a co-brand with two airlines in the same card, which I am told is the first of its kind in India and potentially very rare, if not the first of its kind in the world. Okay. It's very common, like I said, एक एयरलाइन के साथ co-brand, but दो एयरलाइन के साथ it's and this thing. तो इसके क्या फायदे होंगे अगर मेरे पास ये कार्ड है एंड देन मैं कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ अगर फ्लाई करता हूँ, तो नॉर्मल कार्ड और इसमें क्या डिफरेंस? हाँ, सो द रिवॉर्ड पॉइंट्स आर क्वाइट रिच. जब आप कार्ड के लिए साइन अप करते हैं, यू गेट a certain number of Avios points as soon as you sign up. When you renew it after 1 year, you get another chunk of Avios points. आपके जो सारे spends हैं, if you are spending on travel and on the airline, you get additional rewards. And like I said, I travel a lot and I travel often by British Airways. So for me, this was a good card to have. There was a point in time when my one daughter was in US, the other one went to UK. तो उनके travel के लिए भी I used to often buy them tickets on these airlines. So this worked well for me. Totally contrasting that, something very different. This is the first co-brand card that Taj Hotels came up with, and I've been a very loyal Taj customer, and basically this gives not only discounts at Taj restaurants, it not only gives access to the Taj lounge, it gives access to the Taj chambers for free. Certain number of times a year. There are some caps on that, but Taj lounge, Taj chambers, restaurants in Taj hotels, certain number of room nights free, but certain at a discount. So a whole host of benefits from Taj, and because I'm anyway a loyal customer of Taj, it works well for me. So this is a Taj co-brand. What's the price of this card? Like, what's the annual fee that you have to pay? So many of these very, very specific cards do come with a fee. The Taj card has a fee in the vicinity of about ₹1 lakh. So these are not free of cost. Like a lot of people don't want to pay any kind of fee for a card, and for them then this is not the card. For them, if they don't want to pay any fee, that's fine, but like I said, there are really some very, very exclusive benefits on this card, like the use of chambers and the lounge. So if you really ascribe some value to that, and the discount in the restaurants, and the 1 or 2 room nights that you're getting free, then that 1 lakh is more than offset or compensated. But like I said, it's a different courses for different people. This is a very interesting card. This is a card which really focuses on experiences. And this is the first time that a media group has come up with a co-brand card. And actually the metal used in this card, Raj, this was part of the printing press of the of Times of India. So the first 1,000 cards of this co-brand, they used the metal of the press from which Times of India was printed. Nice. So again, something little unique about this. And क्या मिलता है इसमें? Exclusive क्या है? So Times Black.
again, they have a wonderful app and you can go and see a lot of things that are there. But even the launch of this card, Raj, it happened at the Gateway of India in Colaba. And shayad, as far as I know, there's hardly been one or two brands that have actually had access to the Gateway of India to launch their product. I believe some fashion brand had done it many years ago, but this card was launched at that. And recently, they also organized an event for card holders at the Lal Killa in Delhi. So the focus of this card is not is more experiences. और जितना आप इस कार्ड पे spend करते हैं, more and more experiences get unlocked for you. So, next month there is a, some kind of concert happening. You get exclusive tickets for that. There is an event happening with Usain Bolt. If you want to go for that, you get some tickets with that. So, very, very much focused on exclusive experiences. There are certain clubs where you get access to those clubs if you have this card, for which you can either become a member of the club at a discount, or you can access the clubs for events through this card. What's the annual price of this so card? This card has an annual fee of around 20,000 rupees. And again, even if you avail of 2 or 3 or 4 of these benefits, आपको उससे कहीं ज़्यादा value मिल जाएगा. But the idea is not that. I think some of these cards have fees because they want to also maintain a little bit of exclusivity. And most of these cards are sort of जो हम कहते हैं by invitation. So that's one set. These are 2 very popular cards. They are the leading cards of the 2 respective banks. And these cards typically don't come with a fee, but there is a minimum relationship value you need to have with the bank. और जब आप वो threshold को meet करते हैं, then you get issued that card. So one is HDFC's leading card, one is Axis Bank's leading card. And अगर आप certain value of deposits or investments maintain करते हैं, तब आपको ये कार्ड इशू करते हैं. बट ये दोनों बहुत डिफरेंट कार्ड्स हैं. हाँ तो लाइक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ एनुअल थ्रेशोल्ड, राइट? बर्गेंडी प्राइवेट काफ़ी एक्सक्लूसिव कस्टमर्स को मिलता है. इन्फीनिया तो हर किसी को मतलब बहुत लोगों को मिल सकता है कंपैरेटिवली टू बर्गेंडी. सो हर बैंक का अलग स्ट्रेटजीज भी हैं, अलग थ्रेशोल्ड्स भी हैं. बट लाइक इन्फीनिया का थ्रेशोल्ड विल बी लेसर देन बर्गेंडी प्राइवेट, राइट? इट इज़ लेसर, बट there could be and there will be, I'm sure, over a period of time, enhanced offerings from even the other banks, which will have something for जो हम कहते हैं ultra high net worth or like private banking relationship customers. So is Burgundy private for ultra high net worth? Burgundy private is positioned. क्या इसका annual fee होगा? So many of these cards, they don't come with an annual fee, but you have to maintain a minimum value of relationship. Spends भी हो सकता है, या तो spends होगा और एक combination of spends and आप कितना deposit and relationship maintain करते हैं बैंक के साथ, उस हिसाब से banking कितनी strong रखते हैं. So look again, but still, like if you have to put it in numbers, because there's a cost attached to it, right? Infinia is like 10,000-15,000. Yeah, so every bank has a different. And Burgundy would be like a lakh or 1.5, or is it 40,000? No, it's not in that range. It's like most of the people, at least even I know in my own case, it's about relationship value. Okay, and what's the relationship value that you have to? So it the banks decide what it is.
I'm not being very this thing about it, but the banks have a range. If you meet that range and they issue that. So I said it's a combination of spend and relationship value. But like I said, again, there is no one size fits all. करीब 8-10 साल पहले इंडिया हैड वेरी फ्यू ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ कार्ड्स. आप जिस बैंक के साथ बैंकिंग करते थे, आपको वो बैंक ही कोई कार्ड दे देता था एंड यू वर्कड विद दैट. व्हाट हैज चेंज्ड इन द लास्ट डेकेड और सो? एक तो देयर आर different tiers of offering from the banks, like we are discussing, based on spend and relationship value. And the second is the growth of co-brand cards. Virtually her airline, every major hotel chain, every major e-commerce entity or platform, they have all started looking at co-brand cards because these cards are a huge driver of loyalty and spends. Yeah. And not only on the platform, but off the platform as well. True. So that's a big change. And because of that, I think going back to again something that you said, it becomes very important for the bank and the co-brand partner and the network to look at the data of the customer and make sure that they have the most relevant offering for the customer, given where the customer is in his or her journey of life. अगर वो नहीं करेंगे, क्या होगा कि somebody else will come along and offer them a better product, which was exactly the thing that you were narrating. Yeah. They will come and offer them a better product, and the bank and the network and the merchant might just lose that customer or lose a part of the value of that customer was giving them. So looking at that data, looking at that analytics, and making sure that we are staying relevant is very important. ऐसा नहीं कि हमने आपको एक कार्ड दे दिया और जो whatever is working for you today will work for you for the rest of your life. And as people's life circumstances evolve or their family circumstances evolve, and then again, like we were discussing earlier on a different note, that when someone has a spouse or someone has children, then you have to think about, do I even have the right card for the family members? Yeah. Not just for the primary card holder. Fair. So that's how it is. Tell me one card जो सबसे exclusive card है Visa का. Like how there's one of the most, like one card which is very talked about is American Express, Centurion. Correct. Something like that. Does Visa have something? So like we around the world, Visa का सबसे exclusive card कौन सा? So we have, absolutely, there are many cards in the US. One of our most exclusive cards is a card that we do with JP Morgan. It's called the Sapphire card. क्या होता है इसका? Again, a lot of those values and benefits people will be able to relate to in the US, but the kind of rewards you get for the same level of spend is very, very compelling. In India, we launched a card with Axis Bank, which is called the Primus, the Axis Primus card. So it's one notch higher than even the Burgundy Private card, and it is so we have a. क्या मिलता है Primus में लोगों को? So again, there's a whole host of things there, but there's like a concierge service, and it's not only the standard set of value and offer. If you require something that is very, very bespoke, आप concierge को phone करेंगे and the concierge will help you. So I'll give an example. When we launched the Primus card, one of the first calls that the concierge received was
a family wanting to get a table reservation at a Michelin restaurant in Paris. That's normal. बहुत सारे concierge services around the world will get that for you, nothing big. But this family said that, look, we have a 8-month-old baby and we don't want to leave the baby anywhere. So this restaurant has to allow us to bring this baby. 8-month baby. Right? Now, many Michelin star restaurants may not allow children and definitely children below a certain age. Because रोके ambience खराब करेंगे, experience खराब कुछ भी हो सकता है, right? Now, obviously, that's like a private request. I wouldn't know exactly how we managed to fulfill that, but that's the kind of level of customization that the concierge service offers. So I could list out a whole host of benefits, but benefits are benefits. The real value of the highest tier of card is things which are not measurable only in terms of money or benefit. तो अगर मैं आपसे ये कहता कि इस कार्ड पे for every 100 rupees of spend you get 5 points or 5 miles, whereas some other card gives you 3 miles. It's okay. I mean, somebody can relate to that, somebody may not relate to that. But the real power of the highest tier of cards is that ability to really deliver bespoke, customized experiences which matter to that customer. अब किसी को मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट चाहिए तो किसी को they want an entire safari trip to South Africa planned, somebody wants something else, and I just happen to give 2 examples of travel, but I'll give a completely different example. When Coldplay was playing in India, कितना था टिकट्स का डिमांड. अब किसी कार्ड होल्डर को अगर Coldplay के टिकट्स चाहिए या टेलर स्विफ्ट के टिकट्स चाहिए या 2 साल पहले 3 साल पहले जब वर्ल्ड कप का फाइनल्स हो रहा था, कुछ लोगों को कतर और अर्जेंटीना का मैच का टिकट चाहिए था. अच्छा, अगर आपने कतर में अर्जेंटीना फ्रांस का फाइनल, कतर में अर्जेंटीना फ्रांस का फाइनल्स, एंड अगर आपने 3-6 महीने पहले टिकट्स बुक कराने थे, दैट इटसेल्फ वाज वेरी डिफिकल्ट. बट सम पीपल विल डिसाइड 1 week before when it is clear कि मेसी is going to be in the final कि हमको उसके लिए जाना है. अब उस वक्त तो nobody is selling tickets unless somebody already has it with them. So the bespoke concierge services that are there for the highest tier of cards in the world are sometimes, I'm not saying it is guaranteed, even able to get you something which is commercially not even available. Because 2 weeks before the final, all tickets are all sold out, right? Yeah. Or 1 week before the final. So those are the kind of things that people value beyond money. And there is no set play for that. You just have a service which you call and say, मुझे ये चाहिए. आप वो figure out कर लो. आप figure out करो. And these customers are not shy to pay for it. हाँ, पैसे तो भरने ही पड़ेंगे. हाँ, जो extra price होगी, that you have to pay. That you might discuss कि भाई चलो, what rate are you getting me at? It's not a blank check. But some of them are, they said, look, we don't care. कि कितने पैसे भरने पड़ेंगे, आपको बस चाहिए, आप कर दो. आप कैसे करो ये, this is your problem. So I'm just trying to communicate that, because like I said, I can list out a bunch of things, but so the question of the day is, right, how do we get FIFA 2026 tickets? First sign up for a Visa card. And actually, Raj, there is a window of pre-sale that is being opened for Visa card holders to enable them to bid for FIFA tickets. That is already happening, by the way. So if you are seriously interested, I have to share that link with you, because that pre-sale window is opening. And then there's, of course, we do get a certain number of tickets for India, which we allocate
to our bank partners and say, here's something you can offer your clients. बांटो. हाँ, तो वो तो है, बांटो उसको. तो वो तो होता ही है, पर there is a general site that gets opened for FIFA, for Olympics, for all card holders to put in a bid. And it's very interesting. This FIFA, you put in a bid and it's a dynamic model by which tickets are going to be allocated. Yeah. Are you going to the finals? Haven't decided yet. You can at any point. नहीं, ऐसा नहीं है. Tell me more. I like this part. Tell me some crazy insights and data और क्या कहाँ से चीजें. हाँ. You must be going through this over the years. Right. Every month आपको ऐसा कुछ ना कुछ मिल रहा होगा. इस कंट्री में ये हुआ, उस कंट्री में ये हुआ, इधर से ऐसा डेटा मिला, something like that. You know, there are some myths about cards. And why is it important to give people a better understanding of cards and what I would call responsible credit. जब लोग एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है. एंड हाउ डू यू फुलफिल दैट, राइट? तो इंडिया में टुडे वी हैव अबाउट 1 billion debit cards. 1 billion debit cards. 1 billion debit cards. So about 100 करोड़ डेबिट कार्ड. हमारी आबादी 1.4 बिलियन है के आसपास. सो वी हैव अबाउट 1 billion डेबिट कार्ड्स. हालांकि दैट डजंट मीन दैट 1 billion people have it, क्योंकि एक के पास मल्टीपल है. बिल्कुल. नाउ in contrast to that, credit cards, there are only about 110 million. So 11 करोड़. नहीं, हाँ, 11 करोड़. 100 करोड़ डेबिट कार्ड, 11 करोड़ क्रेडिट कार्ड. कितने लोगों के पास होंगे? हाँ, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो 11 करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड्स हैं, देर आर ओनली 50 to 55 million, यानी 5 से 5.5 करोड़ के बीच में यूनिक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स. क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 2 या 3 क्रेडिट कार्ड्स भी हैं. तो करीब 50 और 55 मिलियन के बीच में यूनिक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स. 5-5.5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड इंडिया. 5-5.5 करोड़ बस, ऑन अ पॉपुलेशन बेस ऑफ 1.4 बिलियन. सो एक तरफ there is a huge opportunity for banks and financial companies to increase the penetration of credit cards. But it has to be done in a very responsible manner. Okay. मतलब जैसे मैंने कहा, जिम्मेदारी से. The idea is not to drive people to take credit for the sake of it. However, when I started, I said that there is a misconception or a myth about credit cards. What is interesting is that only 20% of the people who have a credit card actually use it for credit. What do I mean by that? मतलब सिर्फ 5 में से एक बंदा या बंदी महीने के एंड पे जो उनका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है उसको 100% पेमेंट नहीं करते. दे अवेल ऑफ क्रेडिट, मतलब दे मेक अ पार्ट पेमेंट एंड कैरी फॉरवर्ड. हम लोग इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट रिवॉल्वर्स. रिवॉल्वर क्या होता है? रिवॉल्वर मतलब बंदूक नहीं है, बट दे आर रिवॉल्विंग द क्रेडिट. अगर आपको 100 रुपया भरना है बिकॉज यू मेड परचेजेस ऑफ 100, देर इज अ मिनिमम पेमेंट यू नीड टू मेक. यू इधर मेक द मिनिमम पेमेंट or you make little more than the minimum payment, but you're not paying the entire 100 rupees which is outstanding on your bill. तुम्हारा 100 में से 40 भर दिया मिनिमम के लिए. मिनिमम के लिए, या मिनिमम might only be 10%. हाँ, तो 10 रुपये भर दिया, बाकी 90 अगले महीने भरेंगे. या किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में भरेंगे, और उस पर ब्याज भरेंगे. तो only 20% of the people
in India use a credit card for in this manner. कि जिनको एक्चुअल पैसे की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है. 80% of the people, 80% लोग are what we call transactors. मतलब वो क्रेडिट कार्ड को only as a instrument of convenience to make a payment, to get the benefits, rewards, offers, cashbacks, and एक natural credit period होता है because of the billing cycle of 35 to 55 days. उसका वो benefit लेते हैं, but they pay the bill 100% outstanding every month. So again, many people, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं लिया, some of them say कि oh, we don't want to take credit. And that's okay. क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है या ज़रूरी नहीं है कि आप क्रेडिट लें. That is one. Of course, there are times when people who are starting out in life, जिनको एक कोई नया फ़ोन लेना है या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेने हैं या घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, they avail of credit, they might take a loan, they might use a credit card, and many companies now offer something called buy now pay later, where you can pay in 3 or 4 or 5 installments, और zero cost EMI. तो बहुत सारे ऐसे offers होते हैं, and people should carefully analyze कि क्या मैं इस चीज़ को वाकई अफोर्ड कर सकता हूँ, do I really need it, and if they do, they can avail of these facilities. It is there, but like I said, 4 out of 5 people in the country do not use these cards for availing credit. They use it for the convenience, benefits, offers. So that's a big thing. However, everybody who's using a credit card, they are also building credit history. And हर एक के पास आज इंडिया में ब्यूरो स्कोर्स होते हैं, ताकि जब कभी वो किसी बैंक के पास जाते हैं लोन के लिए, they have a credit history basis which the bank can approve their loan. So the point of explaining this was, large country, 100 crore debit cards, but only 11 crore credit cards. Only 5.5 crore people, unique people have a credit card today. But tell me, is it good? Country के पास कम क्रेडिट कार्ड होना, is it good or bad? हाँ. अमेरिका बहुत क्रेडिट डिपेंडेंट है. Correct. Right? अमेरिका में क्रेडिट स्कोर लाइफ बोलते हैं लोगों की. बिल्कुल. कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक एवरेज अमेरिकन क्रेडिट स्कोर सुधारने में लगता है और एक क्रेडिट से दूसरी क्रेडिट साइकिल पे रहता है. उनकी जॉब डिसाइड होती है क्रेडिट स्कोर्स पे, उनका बहुत सारी कार डिसाइडेड होती है, घर डिसाइड होता है, इंश्योरेंस, पता नहीं कितनी चीज़ें होती है जो उस पर डिसाइड होती है. राइट? तो हैवी क्रेडिट डिपेंडेंट, देश ही क्रेडिट डिपेंडेंट है. राइट? वर्सेस इंडिया, यहाँ पे क्रेडिट को एज अ डेविल देखा जाता है. अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे टू सम सोसाइटीज, बट एज कि भाई हमें लोन का पैसा नहीं चाहिए, दूसरों का पैसा नहीं चाहिए, खुद करेंगे. क्या फ़ायदे मिल रहे हैं अमेरिकन सोसाइटी को बिकॉज क्रेडिट पे वो डिपेंडेंट है, वर्सेस इंडिया को क्या लॉसेज हो रहे हैं कि वो इंडिया क्रेडिट को अप्लाई नहीं करता? सो बिकॉज ऑफ रिलेटिव ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, the US economy benefits in terms of ability of consumers to spend, ability of people to buy, let's say, a house. We know हमारे देश में किसी को कितने साल काम करना पड़ता है to be able to afford a house, if at all. Right? And I'm not talking just about Bombay. Bombay, of course, is an extreme because of the cost of real estate. But the relative availability of better availability of credit does give a certain amount of impetus and stimulus to economies like US. Even we have seen that in China, we have seen that in Brazil. So ये सिर्फ US की बात नहीं है. But I think the part that I'm exercising is that
it's not a silver bullet that solves everything, because when that becomes excessive, it creates other problems. Fair. So getting that balance right is important. But if your question is, अगर आपका सवाल ये है कि would India and Indians benefit from better credit penetration, better availability of credit on better terms, of course it would. हाँ, तो क्या फ़ायदा होगा? Give me simple, basic layman as above a 5-year-old. तो मुझे क्या फ़ायदा होगा अगर क्रेडिट एक्सेस बहुत अच्छा हो जाएगा कंट्री में? आपने बोला इंडिया में 15 से 20 करोड़ लोग हैं जिनको क्रेडिट कार्ड अच्छे से मिल सकता है, जो अवेल कर सकते हैं, जिनकी इतनी इनकम है या इतनी हिस्ट्री है कि वो एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और वो क्रेडिट का यूज़ कर सकते हैं, राइट? उनको फ़ायदा होगा लाइफ में. बट सिर्फ 5 करोड़ लोग उसका यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो 10-15 करोड़ लोग हैं जो नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा? क्यों यूज़ करना चाहिए? हाँ, तो जैसा मैंने कहा, एक तो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर जो कैश में होता है, दैट मूव्स टू डिजिटल. उससे क्या होगा? So both credit card, UPI, when cash in the economy reduces and digital payments increase, उससे जो cost है of dealing and handling with cash that comes down, and जो transparency है कि कौन क्या खरीदता है, वो जो data है, both with government as well as with the ecosystem improves. So it's a kind of a virtuous cycle, because जितना digital payments बढ़ेगा उतना companies will be able to give more, basis the data of those digital payments, they will be able to give more credit and increase the penetration of credit. क्योंकि एक वो data and information becomes the feeder to this thing. जब cash में होता है, there is no record of that. किसने क्या खरीदा, कहाँ खरीदा, that is not captured, whereas ये information then is available to the banks, to the NBFCs and players. So as we said, it lifts the economy, in terms of spending, purchasing power, the ability of then institutions to give more credit to the right people in the right manner. That I am again and again underlining कि right people, right manner, right quantum, वो ज़रूरी है. The last thing you want in any country is excessive credit or leverage or debt. That's not good for the country. But basically it drives consumption. You take anything, आप two-wheelers बोलें, consumer durables बोलें, mobile phones बोलें, people traveling, and again, this is not elitist, people traveling abroad, even traveling within the country. Domestic tourism is a huge source of potential revenue for us. And people's ability to do that, if they have, money, disposable income and this. But isn't it like a chicken and egg problem? कि अगर मेरे पास बेटर क्रेडिट सिस्टम आ जाता है, मैं ज़्यादा स्पेंड करूँगा तो मैं सेव कम करूँगा, देन जो मेरा फाउंडेशन है ऑफ अ कंट्री की जिसकी वजह से अभी तक मैं स्टेबल हूँ ज़्यादा, वो मैं कम करते जाऊँगा. सो इफ़ आई कंज्यूम मोर, इफ़ आई स्पेंड मोर ऑन कंजम्पशन, टेक्निकली मैं सेव कम कर रहा हूँ. तो मैं ज़्यादा अपने आप को रिस्क में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़, क्योंकि सी समटाइम्स आई वंडर कि क्रेडिट अच्छा है कि नहीं है. क्योंकि मान लो आप, अगर आप अमेरिका या यूरोप जैसी कंट्री, यूरोप में रहते हो, ठीक है, वैसे नेशंस में रहते हो आप, जहाँ पर एजुकेशन गवर्नमेंट टेक केयर करती है, हेल्थ गवर्नमेंट टेक केयर करती है, ठीक है, आपका ऑन अ रेनी डे कुछ ना कुछ वेलफेयर सिस्टम आफ्टर इज देयर एज अ बैकस्टॉप कि आपको जॉब वॉब नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो एंड में गवर्नमेंट आपको कुछ दे देगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे दी. तो बेकार दिन के लिए उन्हें ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं है कंपैरेटिवली टू इंडियंस, राइट. तो जो आए वो क्रेडिट जैसे यूज़ करो और उड़ाओ और कंज्यूम करोगे ज़्यादा, देश बढ़ेगा तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, राइट. इट्स ग्रेट, राइट. सेम हमारे साथ भी होगा. हम जब ज़्यादा खर्चा करेंगे, राइट, तो कंपनीज को फ़ायदा होगा, तो उनसे जुड़े हुए जितने लोग होंगे, स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़, देश में टैक्स, सब चीज़ों पर बढ़ेगा, और हम सब उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे सबकी पैसे बढ़ेंगे, ओवरऑल देश रईस होगा, राइट. पर
ऑन अ बैड डे अगर मैं ज़्यादा सेव नहीं करता हूँ और मैं सिर्फ क्रेडिट से उड़ाते जाता हूँ और ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ बेटर क्रेडिट होने के लिए, मुझे मेरा पढ़ाई का भी देखना है, मेरे बच्चों की पढ़ाई का भी देखना है, मुझे अगर मैं बीमार हो गया तो हेल्थ का भी देखना है, मुझे अगर हेल्थ से नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, मैं जिस दिन जॉब चले गई अगर किसी रीज़न की वजह से AI आ गया, रिसेशन आ गया, जॉब गई, कोई मुझे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी नहीं है। प्लस हमारे इधर लीगल बैटल्स भी इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बाहर लीगल सिस्टम भी बहुत अच्छा है कि अगर आपको कभी लीगल बैटल लड़नी हो तो भी पब्लिक सर्विस बहुत अच्छी है। हमारे हर चीज़ में पैसा लगता है, तो जब इतना पैसा अगर मुझे किस बैड डे के लिए लगेगा तो मुझे सेविंग्स रखनी चाहिए ना, या सो तो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो आप यू आर रेजिंग कपल ऑफ वेरी फंडामेंटल बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस। तो पहले तो मैं कहूँगा कि वी नीड टू ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैसे अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे और आपको बेसिक बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आप इन्फ्लेशन को भी नहीं हरा पाओगे, है ना। तो ये बात ज़रूर है कि द क्वांटम दैट वी नीड टू सेव एंड इन्वेस्ट इज हायर than in a Scandinavian country or West European country or even US or any other comparable developed nation. बिल्कुल सही बात. There is no debate, there is no discussion. Having said that, like I said, it's a balance. Once you have done some amount you need to have in saving, which is pure, जिसको आप कहेंगे कि on a rainy day, आप तो शायद अपना म्यूचुअल फंड भी नहीं बेचना चाहेंगे, आपने अगर घर भी खरीदा, you don't want to be in a situation where you have to you have to sell that or whatever. That's pure what you have for, जैसे आपने कहा, medical emergencies and any kind of way. So you have to have that this thing. Over and above that, you have some investments which have different level of liquidity. कुछ investments ऐसे होंगे जो आप 2-3 दिन या हफ्ते में आप you can withdraw or you can dip into, and some investments are more illiquid by nature. But once you have taken care of that piece, the availability of credit, and like I said, I'm drawing a distinction between a card and just more broadly availability of credit to people who have the means is important. And I'll give my own life example. I bought my first house in Mumbai in 2007. Sorry, it was in 2005. अब back then I was working in a bank. मैं बैंक में नौकरी करता था. The bank was giving me certain amount of loan, staff loan. तो बैंक से मुझे एक staff loan मिला. मेरे पास savings भी थे. But staff loan और savings दोनों मिला के भी I was finding it difficult to buy a house. तो मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था. मैंने कहा, यू नो, ही इज़ अ मारवाड़ी बिजनेसमैन. तो ऑल्दो मेरे पास डिग्रीज थे, बट एक जो बेसिक धंधे का जो माइंडसेट होता है वो कुछ लोगों के पास होता है. तो मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि संदीप, तुमको जिस टाइप के मकान में रहना है, बिना लोन लिए तुम वो मकान कभी भी, मतलब ख्वाबों में नहीं खरीद पाओगे. तो अगर तुम्हारे पास इतने सेविंग्स हैं, बैंक से तुम्हें इतना लोन मिलेगा क्योंकि यू आर लकी कि आप बैंक में काम करते हो, नौकरी करते हो, तो दे गिव यू सब्सिडाइज्ड लोन. बट दोनों मिला के भी यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड अ हाउस. सो व्हाई डोंट यू टेक सम अमाउंट एज अ लोन. मैंने कहा, मैंने तो कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लिया है, ना मेरे फादर ने लिया है, ना ग्रैंडफादर ने, तो कैसे मैं ये करूं. ये सेड, देखो, साल में तुम्हारा सेविंग्स कितना है.
and what do you think you will save in the next few years? And उसने मुझे समझाया कि हाँ, there is always a small element of risk कि if you lose your job, अगर आपकी नौकरी चली जाती है, what will you do? Because that saving is there as long as you are working. Yeah. But then he said कि उस situation में भी Sandeep, you have an MBA degree, शायद you don't find a job immediately, but 1-2-3 महीने बाद नौकरी तो मिल जाएगी, and good qualifications, you have a good track record, so don't worry, you can take, इतना तो लोन ले सकते हो. And that's how I bought my first house. So I always say that it was a aha moment even for a person reasonably well educated and all that. And this was, Raj, I was in my 10th year in my professional career. तो 10 साल से मैंने काम किया था. I had built a saving corpus, but फिर भी मुंबई में मकान खरीदना was impossible, and I had to take the loan. So all I'm trying to say is credit is not bad. Responsible credit will fuel growth in the economy. मैंने जब वो मुंबई में मेरा पहला फ्लैट खरीदा तो उससे रियल एस्टेट सेक्टर वुड हैव गॉट अ थिंग, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग टेक दैट फर्स्ट लीप टू बाय दैट होम. इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट अ लोन. आई मीन अगर मैं किराए के मकान में हमेशा रहना चाहता था, आई कुड हैव डन दैट, यू नो. बट सो क्रेडिट पर से इज नॉट अ बैड थिंग. It will fuel consumption and growth in the economy, but it has to be done in the right way. That's the only thing. Okay. And in a matter of 3, 4, 5 years, I repaid that loan, and you know, so that's how it works. And even हम जो credit card की example दे रहे थे, like a lot of people today, I find they are using sort of this facility of buy now pay later. Somebody wants to go on a nice holiday or vacation, so the option of being able to fund that cost in installments as opposed to in one shot, so some of that is not necessarily bad. You know, it's not the same as you know, someone just recklessly spending just because they have a credit card. So I think that, like I said, it's a discipline, it's a responsibility, and हमें वो discipline build करनी चाहिए. And you know, देखो, lack of discipline, Raj, can happen anything. It can happen in food habits, it can happen in your entertainment habits. So financial discipline is important. Credit per se is not bad, and I never say that we should look at America में क्या होता है या China में क्या होता है. We should decide what is right for India, and you make a very, very good point that we need to make sure that saving plus investment has taken care of all this before we go and buy that fancy car or fancy home or fancy mobile phone also. But tell me, how does ये सब वीजा सबसे पार्टनरशिप तो करती है, वीजा कैसे पैसे कमाता है? So in all these transactions that we facilitate and enable on the network, जिसको मैं, I was describing it as a piping system or a network. So on all these transactions, there is a very small percentage that is retained by Visa. And just like मैं पहले आपसे बता रहा था, like how there are certain perceptions about credit and, you know, how many people actually use credit. There is another perception about how networks make money, which is not necessarily accurate, in the sense that when a transaction happens, the merchant actually pays a certain part out of their earnings. And a part of that actually goes to the banks. The largest part goes to the bank that has issued the card, क्योंकि कार्ड को इशू करने का जो खर्चा है, कस्टमर को लाने का खर्चा, and
any cost of credit of potential default, वो तो bank has to manage. So the largest part of that revenue actually goes to the bank. Some revenue goes to the bank that enables the collection at the merchant end. एक तरफ हम बोलते हैं issuing bank, एक तरफ हम बोलते हैं acquiring bank. तो banks को पैसा मिलता है. And then there is a Visa small part that Visa retains to enable all this and to administer this system locally, globally, etc. So that's our primary revenue model. 100 रुपए अगर मैंने खर्चा करे, मैंने आपके इधर टैप किया, 100 रुपए खर्चा हो गए. अब इस 100 रुपए में से बैंक कितना रखता है, वीजा कितना रखता है इंडिया में? So a lot of this varies मोटा मोटी country to country. A lot of this varies डिफरेंस बिटवीन अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप इंडिया में यूज़ करते हैं, बाहर यूज़ करते हैं. बट बहुत मोटा मोटी द मर्चेंट एवरेज जो कॉस्ट इज़ बिटवीन 1.5-2% टू द मर्चेंट. तो 100 रुपये में से उसको 98 रुपये मिलते हैं या 98.5 दे गेट. द बैलेंस, there's a bit that goes to issuing, the bit that goes to acquiring bank. There is in basis point something that Visa retains. So 2 रुपए अगर too much of secret sauce I cannot deliver. Okay. but what is more important? Even of the amount that we retain, another portion of that goes back to the banks as incentives to help grow the payments ecosystem. And why is that important? So not only the fees that the banks make from the transaction, but we also support the growth of the ecosystem because it's good for not just our business, it's actually good for the whole economy when cash keeps getting displaced with digital payments. Yeah. So in some ways, a lot of people ask me, aapne nahi pucha, but that's good. A lot of people ask me about, so who is your competition? It's not that other card networks are my competition. It's not that other forms of digital payments like UPI is my competition. Our real competition is cash. Because the mission of companies like ours and others who are in digital payments is to displace cash with digital. Subject to security, safety, convenience, and of course, responsible credit where credit is given. But हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि कैश को इकोनॉमी में कम करना है और कैश के जगह वी हैव टू गेट डिजिटल पेमेंट्स. और जितना अच्छा, दूसरा, लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट क्रेडिट कार्ड इज ओनली फॉर रिच एंड इट्स ओनली फॉर. एक तो आप ये भूल जाइए कि वो क्रेडिट है, डेबिट है, प्रीपेड है, बहुत तरीके के कार्ड्स हैं. क्रेडिट कार्ड इज ऑफ कोर्स मोस्ट कॉमन, बट द लार्जेस्ट नंबर इज एक्चुअली डेबिट कार्ड. The idea is, like I said, irrespective of card or virtual credential, the idea is to grow digital payments, and the idea is to make the activity of payment very, very convenient. It should be almost like आपको पेमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए. You shouldn't have to worry about it. आपको neither worry about the safety factor और worry कि मेरा पेमेंट जाएगा नहीं जाएगा, मुझे जो सामान चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा. We want to take that out of the equation. कि पेमेंट शुड बी लाइक बस हो गया, कर दिया तो हो गया. उसके आगे पीछे आपको इतना सोच या जैसे कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेना चाहिए. सो हाउ डू वी मेक द पेमेंट सो इंट्यूटिव, सो सिंपल कि कस्टमर को उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़े. फेयर. दैट्स द रियल मिशन. दैट आप कहीं भी हो, किसी भी वक्त आप कुछ करें, पेमेंट शुड बी जस्ट
simple, intuitive, and seamless. But there's a risk with digital payments, and that risk is financial fog. Do you know financial fog? आप बताओ, how are you defining it? So financial fog is, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में ऑपरेट करता हूँ, Okay. मैं 10 जगह अपना नंबर डालता हूँ, कार्ड डिटेल्स डाल देता हूँ, और उसकी वजह से अब मैं भूल जाता हूँ कहाँ पर क्या क्या है मेरे दिमाग में. I've forgotten where I'm spending, what I've done, कितने मैंने probably maybe subscriptions डाल दिए हैं. फिर जब वो कटता है तब याद आता है, ओ यहाँ से भी कट गया, यहाँ से कट गया, all of that, right? There's a lot of, थोड़ा सा फॉग आ जाता है, क्लैरिटी नहीं होती कहाँ पे क्या कटते जा रहा है, कैसे, और आप इतनी जल्दी टैप कर देते हो, कहीं भी कुछ भी कर देते हो, एंड यू रियलाइज इट मच लेटर. हाउ डू यू सॉल्व फॉर दैट? कोई वेबसाइट या कोई एक प्लेस है जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे वीज़ा कार्ड से 50 सब्सक्रिप्शन है, क्या मैं उसको बंद कर सकता हूँ कि एक ही जगह से? I would say this is the one of the best questions that you've posed to me, and I will say absolutely. So how? So number one, the Indian regulator passed 2 or 3 very, very specific regulations to India. One of those regulations was कि जहाँ पे भी आपने कोई सब्सक्रिप्शन किया है, या तो आपने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर साल या हर महीने या हर हफ्ते या हर 6 महीने मेरे कार्ड से ये अमाउंट डिडक्ट होके ये मर्चेंट को जाएगा, तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के पहले द कार्ड इशूअर विल सेंड यू अ नोटिफिकेशन दैट डियर कस्टमर, डियर राज, क्या आपने डू यू रिमेंबर, और क्या आपने ये सब्सक्रिप्शन लिया है नहीं लिया है. एंड इफ एट दैट टाइम आपको ये लगता है कि आई डोंट रिमेंबर व्हाट दिस इज, या तो ये मुझे डिसकंटिन्यू करना है, देयर इज अ नंबर यू कैन कॉल, और देयर इज द ऐप यू कैन गो टू एंड यू कैन डिसेबल दैट सब्सक्रिप्शन. सो ये तो आपको ये रिमाइंडर आएगा on any standing instruction or subscription. By the way, this is a specific initiative of RBI. दुनिया भर में ये होता है कि नहीं होता है is a different matter, but RBI did this in India. Precisely to prevent from this kind of financial fog issue, जो कि लोग भूल जाते हैं, या कुछ sites इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, because they tempt you with something and then you, before you realize it, you are part of a subscription model, right? तो एक तो ये हो गया. Second, मैंने आपको बताया था पहले about tokenization, that because if you save your card with multiple merchants, the vulnerability of hacking increases. और अगर वो merchant के website पे कोई compromise हो गया, cyber attack हो गया, तो your card details can leak out. And दुनिया के बड़े बड़े very, very big names have had hacking on their sites where card data has been stolen. So all merchants in India cannot store card details anymore, and that token is what they have, and the network matches the token to the card. So that data is no longer sitting in various merchant sites, for example, or payment aggregator sites. So tokenization हो गया. Third thing is, one of the beauties of the card payment is आपका पूरा digital record is there on your bank app, and you don't have to wait for the end of the month. आप किसी भी वक्त you open your bank app or your bank site, you click on credit cards, and you can see what are the most up-to-date transactions that have happened. कभी कभी ये होता है कि आपने एक रेस्टोरेंट या कहीं पे आपने खाना खाया, या किसी दुकान पे आपने शॉपिंग किया, पर जो मर्चेंट का नाम अपीयर हो रहा है वो दूसरा, वो अलग है, बिकॉज ऑफ वो लीगल एंटिटी और रजिस्ट्रेशन, राइट? तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कुछ खरीदा है और इंस्टेड ऑफ राज शमानी इट्स रिटन एज फिगरिंग आउट, ना हाउ डू आई नो दैट दिस इज राज शमानी, राइट? सो at least because that date and time and all is captured, if you go back to the bank, they are able to tell you more often than not say ki. But is there one simple website where you can just go and just keep block, like it's like off, on? Yeah, so dekho, what is not there is a common repository of all your cards, but
at the bank level, अगर आपने किसी बैंक से 3 कार्ड भी ले रखा है, you can go to their app and you can see all the cards. And after the show, I will show you one bank app which I have. But there I can only see credit transactions, right? Haan. Not I can't see subscriptions which I have followed over the years. You may not be able to see future subscriptions. मतलब और like कि हाँ जो साल के बाद वापस होगा तो मुझे आज में भी ऑफ करना है. So I think maybe that's a great point, and there's a room to improve those interfaces to even give you a picture of what are all the subscriptions that on this card have been enabled. Some banks, fintechs may have it, some may not, but that's a great point, and that would further help customers know not only कि मैंने क्या खर्चा किया है, but what are the things I have signed up for which could hit me later. अभी क्या होता है, फिलहाल what happens is the day before your subscription or a week before your subscription you get an advance notice. That is different from going to a site and being able to see and scroll as to what subscription have I signed up for. I think that's a great point, and there's no reason why the next generation apps should not have that. And then there should be also apps that allow you to store similar data for cards across banks. I'm sure somebody in the world has come up with it. I'm not top of my head aware of who, but I'm sure that should be there, because this is a very natural thing for people to want. कि मेरे पास 5 cards हैं. I want one place where I can store where I can see all the information irrespective of different banks that may have issued. One of the reasons, by the way, that mobile tap and pay through a wallet or an app is very popular is for that reason. Because वो wallet के जो का जो app है, that you could store cards from different banks in that, and you should be able to get a single view of that. But whether they will tell you about subscription or not, one will have to see which specific app has that feature or functionality. But that's a good point. Should be there. Well, I think I've covered all my questions. Thank you so much for coming here and spending time with us. Thank you for your incredible patience and great homework and questions. Thank you so much. Awesome. Great. मैं एक बहुत बड़ा believer हूँ कि if you're around right people, बहुत opportunities explode होती है, right? Someday maybe आपका वर्ल्ड पूरा अलग है, मेरा पूरा वर्ल्ड अलग है, लेकिन आप और मैं एक बिल्डिंग में रहते हैं, हम दोनों जिम में मिलते हैं, रोज दौड़ने लगते हैं. 3-4 दिन बाद या 3-4 महीने बाद कुछ ऐसी एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी चमकेगी where we end up exponentially growing our businesses for some insight. You don't know how can I help you, I don't know how can you help me, and then this just gets compounded by if we have 20 more people like us with the right people, right? तो इसीलिए I always thought as a growing entrepreneur जिसकी अभी फैमिली नहीं है और इतना ज़्यादा इश्यूज नहीं है रहने करने के, आई शुड बी वेरी flexible to move where I can find good people, and this is where I should spend my maximum discretionary income. Instead of buying all the fancy toys, I should spend here कि रेंट ज़्यादा दे दूँगा और रहना चाहिए. So this is a thought. अब जब से specifically जब मैं बॉम्बे आया हूँ and now finally I've started maybe spending time with people like you, I found out कि सेम बिल्डिंग में सेम जगह रहने से लोग मतलब ही नहीं, क्योंकि लोग इतने बिजी होते हैं किसी का टाइम ही नहीं होता. लाइक दे आर रेयरली देयर टू probably network. So your highest chances of meeting really high valuable people is through work or else no. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.